Uh, Good afternoon, everybody. So today we're going to discuss about some problems based on hydrogen bonding, and especially it's from chemical bonding part. Okay, children. So the chapter is chemical bonding and molecular structures. So you can see one more question, that suppose somebody asks you, suppose this is HF, okay, this is H2O, this is NH3, okay. So in all, hydrogen bonding is present. Intermolecular hydrogen bonding. Okay. Intermolecular. So suppose when they are in liquid state, okay, so they are having hydrogen bonding. Then one more concept is there. If we evaporate them and when they come to the gaseous state, so in gaseous state also possibility of hydrogen bonding is there, children. Okay, possibility is there. So we can say that yes, and gaseous state also these following molecules can have intermolecular hydrogen bonding, right? Okay, suppose you collect in vapor state, then definitely hydrogen bonding will be there. Just wait a minute, beta. Yes. Symptoms. Check, man. Normal. Okay. Till now there is no symptom. Okay, man. You want this photo? Okay. Yeah. Yes, ma'am. Okay. Okay. Right. Good. There is no symptom now. Every door you are. Any help? Shall I go for online classes? Okay. Thank you. So children, sorry for disturbance. So all will have possibility of hydrogen bonding in their vapor state. Okay. So if such questions comes, you can easily be confident to solve such type of problems. Satomat happy? Happy? सटका है राजा बाहर में जा The next is, see, I will give you condition for metallic bonding. Okay, metallic bonding. I will give you some conditions. Just you see where is the metallic bonding is possible. Okay, just see. Suppose the structure is M minus bond M minus. Okay, one condition is M minus and electron minus. One position is M electron. One position is M bond N. Okay. Okay.
Here let me write it plus, then I think it will be very clear to you. Okay, so see, what is the possibility of metallic bonding? Minus minus, not possible, children. Plus minus, yes, some possibility. Only M, no, because in metallic bonding, metal loses electron and becomes kernel. Okay, and after that, bonding is there. So this is about metallic bonding, electron C model of metal, electron C model of metal. So this is also not possible. So this is the correct one. Okay, kernels and electrons, lose electrons. I have discussed in class, just I am summarizing. Okay, I am not explaining, just I am summarizing the facts. Okay, so that you can, tomorrow is exam, no? So you can solve it. See, this is the metallic structure. I hope you remember. So this for this metallic bonding, this was the model, electron C model. So you can see that cation, not cation, kernels are there, and these are electrons. So type of bonding. So I think I have explained it nicely to you. So you can go for this. Next, let me discuss some more concepts. So metallic bonding is also important bonding. Okay. So you should know what is kernels, what is loose electrons. Okay. And how attraction force is developed between kernels and loose electrons. So these are all very interesting. Any doubt? Okay, you can just send me your doubt to me. I will send all detail if you like. So next is one more concept. The concept is see, suppose one molecule is there, HgCl2, okay, then MgCl2, then CaCl2, okay, then NaCl. Okay, children. So if somebody asks you, okay, in which molecule more covalent character is there, more covalent character is there, or more ionic character is there, more ionic, okay. So what you have to do, one is you should find the difference between electronegativity, difference in electronegativity. If it is greater than 1.7, okay, it is ionic. 1.7, 50% ionic, 50% covalent. Less than 1.7, it means it is covalent in character. Okay, children. And other than I told you, you have to apply Fajans rule also. Fajans rule. Okay. If you don't understand Fajans rule, go and check my lecture on Fajans rule. And next is in Fajans rule only concept was there of pseudo electronic configuration. So those who have pseudo electronic configuration, pseudo noble gas electronic configuration will show more covalent character. Okay. So I think this much hint is sufficient. Now you can check it out. Which one is having more covalent character? Okay. Did you understand, children? Okay. So in this way you can solve. I think more possibilities for HgCl2. Okay.
Shall I move forward? So okay, next is suppose the question is like this. Suppose one molecule is NH3, NH4 plus, okay, and then CaCl2 or CaCl, not cesium chloride, okay, cesium chloride, then Ni3, NCl3, okay, HgF4, like this. So means if somebody asks you, okay, which one is non-directional, okay, non-directional, among these which are non-directional or which are directional. So directional means they should be of covalent bonding, children, and ionic bond means non-directional. Ionic bond are non-directional, children. Just we are discussing, summarizing all everything I have explained earlier, okay. So just see in how many of you, in how many of the particles covalent bonds are formed, means by sharing of electrons and like this, okay. So you can see this is covalent character, covalent character, covalent character, covalent character, covalent character. Here, okay, uh, these are having ionic bonds, children. So ionic bonds are non-directional. Ionic bonds are non-directional, children. Okay. So let us see what are the examples. Okay, children. So suppose out of this we can say these are non-directional. Okay, children, because they are having ionic bond. They are having ionic bond. So right, in this way you can go, and so you have to develop this concept. So here you have to provide, see, all are nearly ionic molecules only, but after that you have to see which one is having more covalent character. So you have to apply this rule, this everything, Pajan's rule, everything. Here we have to find out directional and non-directional, means they are asking about ionic bond and covalent bond. So you can see it very easy. Okay, so you have to find out among this which one is ionic. So this one is ionic, so it's having non-directional. This is ionic, so non-directional. In this way you can go and move forward. Okay, children. So let me discuss some next question. Now these concepts they can ask in various form. Okay, this concept can be asked in various forms. You have to see the question at that time and utilize your brain and
score more. So next is see one beautiful concept. The question is, wait a minute, children. Hello, hello. Oh.
Okay, children. So see, actually today we have done. See, this is regarding boiling point of hydrogen bonding. So I told you about what is hydrogen bonding. Okay, how it helps in uh, increasing and decreasing the boiling points. Okay, so if intermolecular hydrogen bonding is there, then boiling point will increase. If intramolecular hydrogen bonding is there, boiling point will decrease. And boiling point depends upon two things. This the weight of the molecule, okay, children, and the forces of attraction working between them. So this type of things we have done. See, chelation. Chelation means ring formation. So again, important role of intramolecular hydrogen bonding. So everything I explained earlier, just I'm summarizing so that you can use it. Any problem, just please make me a call, okay, or send me the doubt. That's why I'm telling you, never miss any class. You take the screenshot of everything and you can go through slowly. Okay, next question is, see, suppose some molecules are there, MgCl2, okay, then FeCl2, okay, then AlCl3, okay, and then SnCl, okay, SnCl2 only, okay. So if they give such type of molecule and ask in which uh, ionic character is more or covalent character is more, so accordingly you have to use the concept, okay, ionic bond, covalent bond first, difference in electronegativity, then Fajan's rule, then inert, pseudo inert gas electronic configuration. Like this you have to apply, children. So I use it. Okay, children. So just see what is happening. I think you can find out that this one is having more covalent character. Okay, more covalent character. Anyhow, let us see how I came to the conclusion. Means, see, again I am telling you, you follow these rules. Difference in electronegativity, then Fajan's rule, okay, like this. So when you use this formula, you will get that AlCl3 is more covalent, okay, is more covalent. In same way, suppose CaCl2 is there, okay, NaCl is there, okay, MgCl2 is there,
then CaCl2 is there. And somebody asks you, okay, which one is having more ionic? Okay, so I think this is CuCl. Okay, CuCl. Okay, children. So what we can do? You have to you have to apply difference in electronegativity and Fajan's rule. So I think you will find that NaCl is more ionic. Okay, more ionic. So everything, what I'm telling that Fajan's rule, it's not a easy thing. So you are using this Fajan's rule. Smaller is the cation, more is the polarizing power. Okay. So because all of them are same anion, okay, they totally depend upon cation. So Cu. So this is Cu. So inert gas configuration. Okay. Pseudo inert gas electronic configuration is having more polarizing power. So this is more covalent. This is more covalent. Cations, okay, of second group. Cations of second group. Okay, children. So second group is having again more polarizing power than group 1. That's why I am thinking of NaCl to be more ionic. Okay, children. So first of all, you have to see the electronegativity difference, and after that Fajan's rule, then you can go for your judgment, which is ionic and which is covalent. In same way, they can ask you questions like this. Okay, suppose they give you a question like this. Lithium iodide, okay, then sodium iodide, okay, then potassium iodide, okay, then they can give you cesium iodide, and they can ask you which one of them is having high lattice energy, okay, high lattice energy. Think, take 30 seconds and tell me the answer. Okay, children. So what I'm telling, that to calculate lattice energy, you know, lattice energy depends upon the charge of cation into charge of anion. Okay, and the distance also. Okay, children. So lattice energy is directly proportional to the charge of cation and charge of anion and the distance between them. More is the distance, children, less will be the lattice energy. So everywhere the charge is nearly same, children. Charge is nearly same. Okay, but in which case, so we cannot monitor through charge only. Now we have to see the distance. So distance is less in lithium chloride, children, because the cation is small here, anion is big. So now cation is getting bigger. Anion is almost same. Anion is almost same in every case.
Okay, so the size will be less over here, the distance will be less over here. So lattice energy, okay, less is the distance, more is the lattice energy. So here we have to select this one, children. Lithium iodide is having more lattice energy, more lattice energy. Again, I am telling you, if you have any doubt, please let me know. Okay, so they can use lattice energy, concept of lattice energy. Okay, concept of directional, non-directional, concept of covalent character, polar character, by using difference in electronegativity, by using Fajan's rule. They can use this metallic bonding. Okay, so how interesting these questions are. Okay, intermolecular hydrogen bonding, then intramolecular hydrogen bonding. Okay, then boiling point. Okay, and then about chelation, ring formation. So definitely wherever the chance of intramolecular hydrogen bonding, chelation will be there. Chelation means ring formation. These are some molecules. They are asking that wherever the hydrogen bonding where hydrogen bonding can take place. Okay. So like this, we have to consider the concept of hydrogen bonding. When the hydrogen is bonded with fluorine, oxygen, and nitrogen, only then the chance is formation of hydrogen bonding, children. Okay, so these are some concepts. Please enjoy this concept, develop this concept. Any doubt, please let me know. So if you don't know Fajan's rule, go and check Fajan's rule lecture. You will find out total detail. If you wish what is lattice energy and all, go and check lattice energy lecture. I have discussed in detail. Today is Saturday, just we are summarizing what we have learned today. So Asta, are you there? Yes, sir. Okay, so don't get panic. Okay, today is Saturday, no? So on नहीं Saturday, सर, हाँ, मैं see, अभी आई हूँ. हाँ, कोई बात नहीं बेटा. ये सब देखो, मेरा मैं ये नेट सब, का हाँ, थोड़ा इश्यूज था, बंद हो गया. कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा. मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखो, अभी जो आप जिसमें पढ़ रहे हो ना, जो लेवल में, और जो बच्चे आपसे अभी थोड़ा सा मतलब करीब कितना दिन आगे हैं वो लोग, आप कितना दिन के बाद ज्वाइन किए हैं? आर यू देयर आस्था? यस सर. देखो, ये सब ना अभी जैसे कल वो लोग टेस्ट देंगे ना, तो उनके लिए ये सब क्वेश्चंस है. तो देखो, ये सब मतलब तुमको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये क्या चीज है, लेकिन कुछ घबराने की बात नहीं है. आपको अभी आप क्या पढ़ रहे हो? आपके टॉपिक में क्या चल रहा है? आयोनाइजेशन एनर्जी, नो? यस सर. आयोनाइजेशन एनर्जी, हाँ. एटॉमिक रेडियस खत्म हो गया, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी चल रहा है. इसी तरह से ये सब देखो, ये सब जो कॉन्सेप्ट, ये सब जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये जो आप कल जो एग्जाम देंगे ना बच्चे, उनके लिए ये मैं लेक्चर बना रहा हूँ कि उनको फायदा हो. तो उसमें देखना, ये सब जो छोटे छोटे टर्म्स है, ये अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत इजी है ये. तो ये मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिलेटेड विथ बॉइलिंग पॉइंट. ओके, मेल्टिंग पॉइंट, किसका ज्यादा है किसका कम है. उसी में फिर हम लोग बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है. तो आपका मन होगा भी पूछने का कि सर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है. तो बताएंगे आपको, जब आपका आएगा ना, बारी आएगा आपका, जब टॉपिक चलेगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है. लेकिन अभी आप मतलब खाली इस क्वेश्चन को देखकर ऐसा महसूस कीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको. यस सर. तो एक आइडिया आपको हो जाएगा कि कमिंग टाइम में मतलब हमको ये सब चीज पढ़ना है.
तो अभी आपको मतलब अजीब लग रहा हाँ होगा। सर, शायद इससे भी मुझे कुछ आइडिया है कि क्लास 10 में या फिर पहले कभी किया था इसमें से कुछ हाँ, बॉन्डिंग जो था। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो ये सब आपको, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कहाँ कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, कहाँ कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, ठीक है। तो उसी में चिलेशन, चिलेशन का मतलब एक तो रिंग फॉर्मेशन होता है, तो वो हम लोग देखते हैं कहाँ पर रिंग फॉर्मेशन होगा, कहाँ पर नहीं होगा। तो ये सब मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे कोई बोल दे कहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, कहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो उसके लिए भी पूरा मतलब सबको मैंने दिया हुआ है इंफॉर्मेशन कि किस तरह से उनको मेजर करना है, किस तरह से सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। तो जैसे देखिए यहाँ पर किन के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर होगा, तो इसके बीच में होगा, यहाँ पर इंट्रा हो जाएगा, ठीक है। ये सब अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जस्ट मैं आपको एक देखने इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए। इंट्रा 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 इंटर, तो ये सब चीज है। ये कुछ मैंने मॉलिक्यूल्स दिए हैं, इसमें भी जैसे मैंने वर्ड यूज किया है ऑर्थो, मेटा, पारा, तो ये सब पोजीशन का नाम है। सर स्क्रीन फिर से रीलोड करेंगे अच्छा नहीं, आ गया आ गया। हाँ, आएगा आएगा। देखिए, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पारा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को कौन ज्यादा पोलर होगा, तो डेफिनेटली यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें एंगल भी बहुत बड़ा है, देखिए, तो डेफिनेटली इसी में ज्यादा होगा, तो पारा में ज्यादा होगा। फिर सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे, तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब पोलर सॉल्वेंट विल ट्राई टू डिजॉल्व पोलर मॉलिक्यूल्स। तो अगर पता चले कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, कौन सा नहीं है, तभी तो हम मतलब कोई उसके सॉल्युबिलिटी के बारे में बोल सकते हैं। उसी तरह से कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो लिक्विड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, जब वेपर में रहते हैं तो भी पॉसिबिलिटी रहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो उसी तरह से मेटेलिक बॉन्डिंग, तो मेटेलिक बॉन्डिंग का क्या कंडीशन है, ये सब मैंने डिस्कस किया है। तो जस्ट मैं एकदम, जैसे कभी कभी न्यूज होता है ना, 100 न्यूज इन 2 मिनट्स या 30 सेकेंड लाइक दिस, उस तरह से मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ बस। कोई टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट समराइजिंग कि आपने लास्ट वीक में क्या पढ़ा है करके। तो इस तरह से मैं कुछ डिस्कस कर रहा था, बच्चा लोग को दिखा रहा था। तो ये फाइनली मैं लैटिस एनर्जी की डिस्कस कर रहा था। तो लैटिस एनर्जी चार्ज पे डिपेंड करती है और साइज पे डिपेंड करती है। तो जिसका साइज छोटा होगा उसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। तो मैंने इसीलिए लिथियम आयोडाइड को सिलेक्ट किया है कि भाई इसमें लैटिस एनर्जी ज्यादा है। उसी तरह से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि जैसे मान लेते हैं कि एक Na+ और Cl- दिया, एक Mg+2 और Cl- दिया, और उसी तरह से Na+ और O-2 दिया, उसी तरह से Mg+2 और O-2 दिया। अब कोई पूछे, ठीक है, अब कोई पूछे कि इसमें किसमें स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड बनेगा, किसमें स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है। देखो, तो इसमें आयोनिक बॉन्ड बनेगा ज्यादा, ठीक है। जिसपे चार्ज होगा कैटायन एनायन पे, वहां अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें देखना है। यहाँ कैटायन के ऊपर चार्ज ज्यादा है, एनायन पे भी चार्ज ज्यादा है। यहाँ पर कैटायन पे ज्यादा है लेकिन एनायन पे कम है। यहाँ पर 1+ 1- है, यहाँ पर 1+ और इधर में 2- है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ Q1 भी ज्यादा है और Q2 भी ज्यादा है, ठीक है। और साइज भी हमको लग रहा है यहाँ छोटा रहेगा डिस्टेंस, क्योंकि सोडियम मैग्नीशियम ये कैटायन थोड़ा छोटा होता है। तो इस तरह से भी आपको देखना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर हमें
सब तरफ से अलर्ट रहना है। ओके बेटा, ठीक है ना। तो इसको सिलेक्ट कर लोगे, अगर आ जाएगा तो Mg+2 और O-2 को सिलेक्ट कर लोगे, इसके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन रहा है। बार बार देखो, इसी तरह का कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकता है। जैसे NaCl दे दिया, फिर दे दिया CsCl दिया, देन KCl दे दिया, ठीक है, फिर लिथियम क्लोराइड दे दिया। तो अब आपसे पूछा कि इसके अंदर में मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा है। तो आप देख लीजिए कि एनायन सब में है और हमें कैटायन देखना पड़ेगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर वगैरह के लिए डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना पड़ता है, ये वाला चीज देखना पड़ता है। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट, और फिर फजांस रूल भी अप्लाई करना पड़ता है। तो फजांस रूल आपको मालूम है कि जिसका कैटायन छोटा होगा, ठीक है, जिसका कैटायन छोटा होगा तो उसमें पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने से उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो लिथियम क्लोराइड, मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन जब आ जाए तो इसमें एनायन कांस्टेंट देखो, तो हमको कैटायन देखना पड़ेगा, जो कैटायन सबसे छोटा होगा उसमें पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, फजांस रूल का कॉन्सेप्ट है, और उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें ज्यादा होगा। तो ये सब हमको देखना है। तो ठीक है, तो अगर ऐसा हो तो हम लोग बोल देंगे कि लिथियम क्लोराइड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है बेटा। उसी तरह से मान लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन दे दे कि मान लेते हैं कोई अल्काली मेटल M है और उसको अलग अलग चीज से डिफाइन मतलब कर दे, MCl दे दे, MF दे दे, MBr दे दे, Mi दे दे, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट दे दे। ठीक है बेटा। अब पूछे कि इसमें कौन आयोनिक है कौन कोवेलेंट है, तो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर अब M कांस्टेंट है चिल्ड्रन, इस पहले वाले केस में क्या था, एनायन कांस्टेंट था और M वेरी कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर M कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, अब एनायन चेंज हो रहा है, तो ये भी फजांस रूल का ही कॉन्सेप्ट है, फजांस रूल। तो आपको मालूम है F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सा एनायन जल्दी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आपको मालूम है कि बड़ा आयन होने से, बड़ा आपका एनायन हो गया, बड़ा बिग एनायन होने से उसमें पोलर इजिबिलिटी ज्यादा होगा, तो ये जल्दी डिस्टर्ब हो जाएगा कैटायन से, तो इसमें आपका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, मतलब ये वाला चीज में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्यों, कौन से फैक्ट से डिसाइड किया, क्योंकि मैंने देखा कि M सब में कांस्टेंट है चिल्ड्रन, M सब में कांस्टेंट है, M सब में कांस्टेंट है। अब मेरे पास फैसला लेने का जो ऑप्शन है वो साइज ऑफ एनायन पे है, तो मैंने देखा कि I माइनस में पोलर इजिबिलिटी, पोलर इजिबिलिटी ज्यादा है, पोलर इजिबिलिटी ज्यादा है। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो कोई पूछे कुछ में किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम है। ठीक है, इस तरह के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। तो ये ऑल आर ऑन द फजांस रूल, difference in electronegativity to identify ionic character, covalent character, less or more, like this. Polarizing power, polar visibility. So I think I have, during class time, okay, I have discussed a lot about these things. Okay, so let us see question number.
Okay, so suppose I told you about multiple proportion. Multiple proportion. So where this multiple proportion will work out? Will work out when suppose two elements are there and they two elements are there and they form, okay, they form more than one compound. Suppose H2O, H2O2, like this. Then when two elements form more than one compound, okay, then this multiple proportion work out. So you can see the option wherever you find uh, element should be same and compound should be different, then only you can apply multiple proportion. Okay, children. So in same way, uh, constant proportion, constant proportion, children, in same way, reciprocal reciprocal proportion. Okay, then Gay-Lussac's law, Gay-Lussac's law, conservation of mass. Like this you have to remember. These are based on, these are known as laws of chemical combination, children. So I think this is sufficient. Any question it happens, you can ask me. Okay, so let me see what is the time. 7 minutes more, children. So okay, children. So one more thing you should remember. Okay, molar mass, molar mass or molar weight. In chemistry, both are same. In chemistry, okay, molar weight. So many terms are used, children, for same thing. Somebody will use at gram atom, like this. Gram atom. This is actually a name. Okay, it is not 1 gram atom. Okay, means it is not the weight. It is the another name for molar mass. Okay, like this. Gram molecule. Sometimes it is used as like gram atomic weight. So don't get confusion. Okay, these all are same, children. Gram atomic weight. If you find somewhere like this, don't get panic. Okay, this only depending upon whether particle existing in atomic form or molecular form. In same way, gram molecular weight, this is known as GMW, children. Somebody use simply M. This is also molar mass. 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 Okay, molar mass. And you know what is mole. Okay, 1 mole means the value is 6.023 into 10 to the power 23. This is only known as Avogadro's number, children.
So the mass related to Avogadro's number is known as molar mass. This is the nutshell. Okay. So you can put this fact. Whatever the mass related to Avogadro's number of particles, whether it is atom, whether it is molecule, whether it is cation, whether it is anion, there is no concern about it. The mass related to Avogadro's number is known as molar mass, because Na is Avogadro's number, and Na, we can say that its value is 6.023 into 10 power 23, and in short we can sometimes use 1 mole is equal to 6.023 into 10 power 23. Okay, so this type of also concept will be there, and you should know how to convert moles, molar volume, okay, number of particles. So I have given this method how to convert from these 4 terms: number of moles, number of particles, weight, and volume at STP. Okay, so try to use this formula whenever you think that it is applicable. Okay. Okay, children. So this is number of moles. This is volume at STP, children. This is weight. This is number of particles. So when you want to come from number of mole to this side, use this formula. Number of particle is equal to number of moles into Avogadro's number. When you want to come here, you can use volume at STP is equal to number of mole into 22.4 liter at STP. Liter at STP. When you want to come this side, W is equal to number of moles into molar weight. This molar weight only I have given you here. This is only molar weight. This molar weight is known as gram atom, gram molecule, gram atomic weight, gram molecular weight, molar mass. So what you have to do, suppose somebody asks you what is the molar mass of NaCl, calculate. The mass of sodium is what? 23. Mass of chlorine is what? 35.5. Simply you calculate, okay, 58.5. Just write 1 gram over here. This is the molar weight, children. This is the molar weight. So you use this formula according to the question they are asking. So just I have revised. If you want to come back, okay, if you want to come back, then you use formula accordingly. Use formula accordingly. Use formula accordingly. So already everything I have discussed, see children, I am just giving a brief. Just I am recalling. Okay, just I am showing that what you have learned till now, this coming last 15 days. Okay, so you should make a note of it. Okay, how you can calculate number of mole when in this condition is given? Then whatever the volume is given to you, volume at STP, divide by 22.4 liter. If you want to come here, use this formula, W by M. If you want to come here, use this formula, N by Avogadro's number. And here only I told you to use, when you use this thing in a chemical reaction. Okay, so limiting reagent and excess reagent. So you should develop that talent, how to identify which one is limiting reagent and which one is excess reagent. Okay, children. So we'll meet at next class. Take a rest for 5 minutes. Okay. Any question, please ask me. Bye-bye.